I think today we shall start from criteria of abnormal behavior. Anybody want to start? Abnormal behavior. कविता पूरी तो बुझी है ना क्या क्या सुन रहे क्लास सुन क्यों बंद करियो हां बंद करो Under the concept normality and abnormality have been discussed. Abnormality cannot always be quantified because there is no clear demarcation between normality and abnormality. Like physical disorders, the concept of abnormality is a relative term which needs some criteria for all kinds of diagnosis, defined and prognosis portfolios. In this context, the American Psychiatric Association has defined and developed certain standards which are well accepted and are being used. When behavior is not culturally and socially appropriate and approved, it is considered as abnormal behavior. The American Psychiatric Association has significantly specified that the criteria for defining mental disorders must have clinically significant behavior resulting in association with distress of the individual. Further, the behavior or set of behaviors must not be culturally sanctioned or appropriate. However, several perspectives proposed to explain and understand abnormal behavior can be taken for consideration as their summit of ना abnormality जो सब criteria गुड़े कराई थी हमें केमिति how do we determine how do we demarcate how do we point out कि this person has some abnormal behavior if the person is not behaving according to the society or yes according to the norms so like आपको पहले होगा like abnormal कितना कुछ नहीं है like समझ से percentage of view समान है exactly like sir जब ये boost पीटे तो उसको लोगों सोसाइटी जो ताको में abnormal नहीं पड़े but सब जन बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल 100 to 100 रुपए exactly ताको में abnormal नहीं but most of the people are not securing 100 out of 100 बुझी पाते तो सही लगी the boundary or the demarcation of abnormality demarcation माने the line हमें गोटे पर्टिकुलर लाइन टाणी करियो कि एई लाइन रो ऊपर को हितले से ताको abnormal कहियो कि तळे हले ये there is no strict line there is no strict difference बुझी पाछो ना suppose गां गहले suppose गां रे तमे शॉर्ट पैंट पिंदी के बुलुला they may consider you as abnormal है ना पागल है they may consider but if you are doing the same thing in a city getting my point but abnormality basically is when someone is
doing something which is culturally and socially not approved. Okay, suppose it is almost a in a decent manner dress पिंधिकी अच्छा suppose बाहर देखिबो किछि लोक बुलुथांती without dress सब तांका में कहीं के abnormal because that is culturally not approved. तो मैं हमसे बसते वक्त हमसे ठोक मार दो तो without any reason. That is social and cultural not approved, right? So in that case, it will be considered as an abnormal. So there are various criteria, okay, like statistical criteria is there, okay, then pathological, socio-cultural, okay, there are various criteria under which we can demarcate an individual, or we can say yes, according to this criteria the individual is showing some abnormal behavior. Statistical criteria. On the basis of the frequency of occurrence of behavior, the distinction between normality and abnormal behavior is determined. From statistical aspect, it is considered that the most frequently occurred behavior is normal and rare, as well as infrequent behavior is abnormal. Further, it is also called the quantitative criterion of abnormality, which explains that normality and abnormality only differ in degree. The following well-shaped curve accordingly shows the distribution of the concepts like abnormal, normal, and superior in case of general human population. Yes. Now, on the basis of the frequency of occurrence of the behavior, the distinction between the normality and abnormal behavior is determined. From statistical aspect, it is considered that most frequently occurred behavior is normal and rare as well as infrequent behavior is abnormal. तो जो जिनसटा आमे सब बड़े करिथो, okay, the thing that we commonly used to do, जेमिति सबदिन सकाळ उठला परे मुह धोउचंती, ब्रश करचंती, we are having our breakfast, then etc. Regularly we are doing it, right? Every day. That is a normal. Suppose तुम कोउ दिन भी कांदन, केबे कांदेना, हठात तुम कांदेना. Suppose तुम regularly केबे कांदन, हठात दिने कांदिलो without any reason. घरे चिंता करते हैं, तो केबे कांदेनी. Why? Abnormal. That may not be a permanent abnormal behavior, but temporarily that is abnormality, right? Suppose, yes, then छुआ गोटे, छुआ तो किसी कही पारे ना, तार कौन problem कौन नहीं, तो parents केम जाने का देह खराब है, कांदी बो, yes, abnormality. सब दिन कौन खाऊ थो, पीऊ थो, सोई पड़ थो, okay, due to some abnormal behavior सामने तो statistical approach को होती है कि जो जिनसे तक हमें सब बड़े करते हैं regularly करते हैं we are reading about abnormal behavior, how we can determine one individual is having some abnormality within him or okay, there are different type of criteria under which we can categorize or we can differentiate individual की या को या abnormality ताको say abnormality is the very first criteria we are going through. The very first criteria is statistical approach. Okay, statistical criteria. जोड़ से कहते कि आमे जो जिनसे को regularly करू थाओ, frequently करू थाओ, that is considered as normal. जो जिनसे को मैं हठात करू कि infrequently करू, कि rarely करू, that is considered as abnormal. Okay? तमें सब दिन खाऊ चुके तो बड़े दिन खाई बोली. Then घर लोग भाग के कौन है यार चिंता करिए बुझी पड़ता. Yes. Then हाँ बड़ा distinction दे दीजिए. Normal माने से कोटे कौन होता है normal? Class का example भी नहीं करेगा. Exactly. Class में जैसे अगर highest mark रखो तो all the time superior. ये सब बड़े less रखो ची. हाँ ताको में superior कही परिबा आको में abnormal कही परिबा ना
getting my point ताको भी हम superior बोली धरिबा कथा no but we have to categorize right जो मैंने एवरेज नंबर Normal. मैंने एबनॉर्मल कहि दे ना तो बहुत पाठ पढ़ते बट किसी हाँ कहि दे ताको भी हम देखो सब बड़ा में superiority को superiority बोली भाव देने abnormality बोली तो consider करा दे suppose गोटे पिले सब बड़ा पढुछि आ किछि जानि बुझी परछ तो हम तो किए सब बड़े पड़े तमे केते घंटा तमे पढुछ तमे केते टाइम पढुछ 6 आवर्स मिछ कोने केते को केते बड़े सर एना ट्यूशन जदि मो इंक्लूड करबे ताहाले 6 आवर्स हम जदि ट्यूशन रो 1 आवर इंक्लूड करबे सर कारण रात्रि रे पढला बटे ऑफिस भला पूरा बस की जदि 11 रो बसे तो मो चिंता करता वेरी गुड एते मैंने पाठ पढ़ा रहे थे बिकॉज़ यू नो आई तमर केते 5 मिनिट अब टोटल नाही बोले टाइम टेबल दरो तमर 4 के 5 काली कोन पढ़तिला हिस्ट्री एग्जाम अछि तो हिस्ट्री इसी कोन चैप्टर चारटा यूनिट ये सूर्य कितने पढ़ते तुम अच्छा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे 15 मिनिट एमती पढे सर एक्चुअली सेम नहीं केबे था कि तोरे एग्जाम होथिला दिगोना पढ़ो किंतु कंसिस्टेंसी ता थाए मो सब कंसिस्टेंट हटाडे पढ़ी सर कुछ पढ़ समझ को पढ़ते लगे सर मोर डिस्कशन पढ़े हम तो पढ़ते हम सेटा लेक्चर में से तो हुए तो लेक्चर मोर बसी 6 7 मिनट पढ़ने में पढ़ा हुए हो पढ़ इरिटेशन लगे बीच में यू कैन टेक गैप्स अरे आर्टिस्ट स्ट्रेस 2 घंटा भी कहीं पढ़ी करी गैप्स सब वही पर फोन तमर केते टाइम नाही तम टाइम टेबल ना बेस्ट वे टू स्टडी सिंगल पर्टिकुलर टीचिंग सब जल्दी पाठ पढ़ा स्टार्ट कर एग्जाम में कितने दिन लगता है 15 दिवस मु घर में बहुत जल्दी वर्षा में पढ़ तो चल पेपर तो बहुत से पढ़े तारे हां हे जी एबे भी टाइम अछि तो मान को पढ़ा आ जदी 15 20 दिन में जदी एमती टाइम पास कर देला ना आ जदी 15 टू 20 डेज तमे एमती टाइम पास करी पार कर देला you are going to lose many things you are going to बहुत regret करेगा एबर कोने वाला पढ़ा ना एबर पढ़ा नहीं तो सब दिन बोली तो ऑर्गेनाइज से खाली किछि आज करबी काली करबी हेले रहि जीव तमे आज बोली पतो स्टार्ट इट फ्रॉम द टुडे ट्यूशन जो गला मात्र स्टार्ट करो बुझ पर मैं कहि दउ से बहुत हैरान हो डोंट लेट योर लाइफ टू रिग्रेट बहुत रिग्रेशन हो सकता है काश पढ़ दी था yes then pathological criteria तो बिना पॉलिटिकल साइंस क्लास तमे कहीं आसले नहीं आ तमे आसला पॉलिटिकल साइंस क्लास तमे तमे जाने मतलब पॉलिटिकल साइंस क्लास हां I don't know. ना काले हम मुझे पीछे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं वो इकोनॉमिक्स सर आप लोग सारा वर्ष बोलते हैं पॉलिटिक्स में कर रहे हैं सर कैसे हाँ समझे करो सेट टाइम पॉसिबल तमो अच्छा मैंने 18 में पढ़ा है ना तो मेरे को नहीं अपन सब क्लास में कारण संध्या क्लास देबे ना संध्या आज सब्जेक्ट रखिए देबे नहीं क्लास सकाळे जदी कर बस Okay, pathological criteria.
और ना सुनो तमे सार के सहित कथा जेतेबेले सार कहिबे ultimately he is the everything, okay, he will decide everything, okay? पूछो Indian foreign policy. Indian foreign policy, what is foreign policy, then the basic Principles. features or principles of Indian foreign policy. इतना सब कुछ नहीं है, ये एक ही पेज में हो जाएगा. हाँ चलो Pathological criteria. Research studies strongly explain that mental disorders can be identified on the basis of symptoms and physical structure of the individual. Pathopsychologists have found that even a slight unpleasant sensation in the stomach or a harmless epidemic disorder makes such people to anxiety and think of their possible suffering from cancer. It also appears to be true that biological specifics of a given disorder do not directly cause mental disorder but play the role of conditions for the forming of an anomalous personality. Personality. Pathological problems are not new to the people living in different cultures and common with their own culture. Most of it has often more widespread that abnormality is emotional experiences does not seem similar. In the past, it was considered if mental disorders happen to be caused out of brain damage or deterioration. While determining the fact, it became inappropriate to many mental disorders. Later on, it is found that mental disorders may be psychological in nature, which have symptoms of some underlying internal pathology or illness. For example, fever is a symptom of an underlying food or urine infection. Further, Sigmund Freud developed a theory of psychopathology and used a method to identify and treat mental patients which is called psychoanalysis. Also, people with mental disorders have abnormalities in experiencing and manifesting emotional provoking situation while the same is not observed in many people. Yes. The pathological criteria means what is pathological criteria? How can we distinguish an individual who is going through any kind of abnormality? So, what is the meaning of pathology? Pathology means kona? Yes, anyone? Pathology means our deho bhitere kichhi disease. Pathology means anything related to the biology of an individual. That is pathology. Okay, the pathological criteria means suppose someone is suffering from some kind of disease. So, से disease विषय में भाभी क्या हमारे बड़े abnormal ही जाने. जेमिति कि गोटे experiment करा हितला किसी का लोकं को ये common disease थिला सन. तो 4-5 मिनट को भीतर करा हितला. I don't know the detail of all these things. I'm just giving you a general view. कि टोटल 5 जन थे 3 जन को एक्चुअली इंजेक्शन दिया हितला से डिजीज रो आ दिन को दिया ही नहीं तो 3 जन कहले कि हम ठीक है गेलु ए दिन भी ठीक है दिमाग कट कर if you will read a book Rich Dad and Poor Dad पढ़ जा बोला कौन सी से सर आउटे जो अपन बोलते हैं एक्सपेरिमेंट किया उसमें आर्टिकल में पूरा कोच है एटा बड़ा आर्टिकल में पढ़ हां सर हम भी पढ़े पता चला आर्टिकल yes what is there in Rich Dad and so many things I would have book think rich and grow rich think and grow rich बहुत सारा बुक okay तो ସେଥିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ना आमे जो भाबु कि ना हमको इनकम कले ही हमें धनी ही परिबा पैसा वाला ही परिबा नो हम मेंटालिटी का भी सेंस होबा द बहुत लोग देखो बहुत पैसा इनकम करछे बट दे डोंट हैव दैट स्टैंडर्ड दे डोंट कैटेगराइज्ड एज अ एलीट क्लास दे डोंट बिलोंग टू एलीट क्लास बहुत पैसा इनकम करछे परस किछि लोग अल्प पैसा इनकम करके दे बिलोंग टू एलीट क्लास
but is elite class. Hmm? Not powerful. Prosperous people. Prosperous people. ଆପଣ ଏ ଲାଇନ୍ ଟା ମାନେ କି ଆମର ୟୁଜୁଆଲି ଯଦି ୱାର୍ଡ ଆସେଟ୍ ଆମେ ତ ଆସେଟ୍ ଶୁଣୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ କଣ ଆସେ ପଇସା ବଟ ସେଠି ଆସେଟ୍ ର ମିନିଂ ଅଛି କି you should have exactly. ବୁଝିପାରୁଛ? You should always be optimistic. You should always be clear about your future goals. You should always work for that. You should always have a rich mentality. Rich mentality. କେତେବେଳେ କହିବେନି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବୁଝିପାରୁଛ ବେଳେ ବେଳେ ଶୋ ଅଫ୍ କରିବାଟା ବି ଜରୁରୀ ବୁଝିପାରୁଛ getting my point ତ yes ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବା ଦରକାର କି you are living a good lifestyle getting my point ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ପଡେ ଲୋକଙ୍କର ଆମ ଉପରେ बुझिपाରୁଛ ତ इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी इट्स माने दिमाग का खेल है ये सब तमे जेमति भाबिको पक्का जे भल लागो माने ट्यूशन जीवन जीवन को इच्छा बनी केबे करी के देखो तमे तो सब बार करथो बुझिपारुछ किंतु तमरे जरा भी हो तो तमे भाबो कि ना ना मते क्लास करियर अछि आई शुड नॉट मिस द क्लास you will get energized बुझिपारुछ तुमको से नोटे वर्ड टे मार मन पड़ नथले कोन तुम बुझोथि ए स्टीरियोटाइप्स एटा स्टीरियोटाइप्स व्हाट इज स्टीरियोटाइप्स प्री assumptions thoughts past experience जेंति कि मु भाबी नै छी कि से गोटे खराब एक्स इज ए खराब छुआ तो इन द मीन टाइम से भलो हे सारी छी किन मु ताको भाबी नै से खराब पिला माने से खराब पिला ही अछि दैट इज स्टीरियोटाइप माइंडसेट कोन गोटे बुझोथि वो तंत्र ने रिलेट कर दो घर में देख केला then socio-cultural criteria. In our society, an inverse correlation exists between socio-cultural impact and the prevalence of abnormal behavior. The lower the socio-cultural status, the higher the occurrence of abnormal behavior. The abnormal exactly. एटी कोन मु जोटा गां कथा तम कहि बुझी पछो सपोज गां रे तम गोटे शॉर्ट पैंट पिंदी कि बुल्लो everyone will be criticizing you looking at you but in the city no one will match right The abnormal behavior is perceived in terms of cultural inappropriateness, which are held responsible for any kind of dysfunction associated with distress or disability. Research studies have shown that people living in poor socio-cultural conditions appear to have greater tendency towards some forms of abnormal behavior. People with any kind of abnormal behavior usually fail to adapt the situation faced within their own socio-cultural setup. Further, in a society categorized by poverty, unemployment, illiteracy, and blind beliefs, there are changes in behavior of the people which are most often considered as abnormal. Furthermore, cultural researchers have designed to detect abnormality and improve the social conditions, which in turn will facilitate the task of prevention and treatment of mental disorders. Okay. तो कौन जो भी सोशियो कल्चरल सिस्टम टा जते कोर थिबो सेठी abnormal देखियो भूत लागि गला ताको डाहाणी लागि छी सेटा कोठी अधिक होय गां होय सेठ तो केबे गोटे रिमोट प्लेस भी दिल्ली का हाको ना काको भूत लागथो बुझि बुझछ दिल्ली का हाको ना काको गोटे कोन लागि थिबो आ किसी नजर लागि थिबो ओके दिस थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग एबे भी तमे देखि तो कि जो चेक कर दियो जो यस सर अरे बहुत सारा ओडिशा रे बे ट्राइबल नॉट ओनली इन ओडिशा छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड ट्राइबल एरिया सामाने कोन करन सब छुआ को जर होची ताको चेक कर दियो यू आर ऑलरेडी पूरा लोहा गोटे माने लोहा को निया रे गरम करके ताको चेक कर दियो हाउ इनह्यूमन यस माने इनसेन कंप्लीट इनसेन एमती को गुली करके मारी देबा कथा सब लोग बुझी परछ तो तांकर बिलीफ थाई एटा कॉलेज से ठीक है छी कोन हला आई जाई के देखियो YouTube रे सर्च कर आसी
क्या सर्च करोगे तो क्लास के बाद बताता हूँ मैं होची कौन था हाँ कौन कहते बुझी पारुछ तो सेठी बहुत abnormality देखा जाए सब बड़े काहे की Because lower standards. lower standard okay lower Poverty, poverty literacy, हाँ unemployment. तांको ये सब यात्रा करने पे बहुत टाइम मिले okay जेमिति कि I have seen even मो जेतेबेले even I have seen my parents जेतेबेले आमे कोडे जाऊ सपोज रास्ता रे बिले आसी गला से अटकी जाते Kala belly. whatever बिले comes they used to stop they used to stop but ମୁଁ ବି ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ but now I am not practicing बेले असले मो भाबे कि से ता बाटरे जाउची मु बधे ता सामने पड़ी असली से काहे कि मो सामने आस मु केबे माने नहीं केबे नहीं बुझ पर एज पे माने बहुत समय झगड़ा भी हुआ तुम जानते हो घर लोग सहित ओके तो मु केबे माने नहीं तो एगुडा को कोन ना साइकोलॉजिकल गोटे गोटे एगुडा एस्पेक्ट्स एगुडा काम करे जेमति कि हम मुंडरे बसे दिए हिच कि बिलेटा रास्ता रे क्रॉस करे माने किछ गोटे खराब हबार संभावना ସେଇଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲେ ସବୁ ହଁ କହୁଥିଲି ସପୋଜ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦେଇଛି କଣ ବିଲେଇଟା କ୍ରସ୍ କଲା ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଡ୍ ୱିଲ୍ ମେ ହାପେନ୍ ଟୁ ଅସ୍ ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଯାଇଛି ଆମର ତ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ନା ସେଟା ତ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ଭାବେ ଆମେ ସେମିତି ହେଇଯାନ୍ତି ଯେମିତି ତମେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ तुमको लागुथबे कि ना मु तो रहूची मो सांग माने होची कोन कहला ये करचंती किंतु मु करूनी सेमती तो मु भलो अछि नो slowly that impacts सब तमा कहले कि आदि मु होची कोन ठुमका पूरी खाई देली काई मो देह तो खराब होला ना ए जो बाली यात्रा रे मिले नहीं जो ठुमका पूरी माने किछि न थाय सेठी खाया पे पूरा माने अति माने मूर्खा में खाइबा पूरा तेलटा खाइछ केबे पूरा तेल न थाए खाली ऑयल पूरा ऑयल थाए किछि खाइबार थाए सेठी माने एते ऑयल थाए ओके व्हाटएवर तुमका पर तमे जानि ना ओके मु कहि देली कि आ किछि तमे जंक फूड खाइना ओके डीप फ्राइड वाला किछि गोटे खाइ दल डीप फ्राइड वाला छोले भटूरे कि व्हाटएवर तमे कहले काई सार कहउतले कि डॉक्टर कहउजंती कि एमती ऑयली फूड खाइले जंक फूड खाइले देह खराब जे काई मो देह तो खराब हो सेटा कोन दिन रे खराब ही जो तो आमे जो भले लोकन का सहित रहंती सेटा स्लोली इम्पैक्ट बुझी तो ऑलवेज फाइंड अ गुड कंपनी ऑलवेज लिव विथ गुड पीपल एमिति लोकन का सहित रह जहा से तमे किछि सिखि परिबो एमिति छापरी ये वाला रोहने की getting my point There was even a quote: "Be with people or be friends with people who you want to be." exactly birds of same feather flex together okay प्लस 2 रे देखिए सब पिला आसे समस्त संग होई रहउथि मासे गला पर सब अलग अलग आइ सब निज निज कैटेगरी पळेबे बुझि परछ पाठ पढ़ा पिला पाठ पढ़ा कैटेगरी बातरा ग्रुप रे बाहर बुला बुली वाला बाहर बुला बुली ग्रुप रे एवरीवन विल गेट सेटल्ड एबे प्लस 3 से या हबो न सब संग होई बुलबे तब देखा मासे सब अलग होई जिवो गठ बनेबो बुझि परछ चार जन पांच जन ग्रुप रे फ्रैगमेंट हो सब okay so always try to be with good people yes Surya what you are asking ना poverty unemployment एगुडा को रहिले कोन होय ना ताकर सोशियो कल्चरल वैल्यूज ता सेति डाउन थाए ताकर सोशियो कल्चरल वैल्यूज ता सेति डाउन थाए इन द सेंस कि सब ब्रॉड माइंडेड न थांदी साइंटिफिक टेम्परामेंट ताकर पाखरे न थाए बुझि परछ व्हाट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छा एक में तो जिंस मॉडर्न से एक्सेप्टेबल एक्स ना देखो साइंटिफिक टेम्परामेंट माने कोन व्हाट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट temperament About science. have you heard the word renaissance enlightenment what is enlightenment किसी छोटे जिंस को जानिबा yes किसी गोटे जिंस को जानिबा ultimate truth को जानिबा is known as enlightenment word ता आसीतला केबे during the period of renaissance
Okay, after mid of 16th century, जेतबे रेनेसांस हेतला कोडी यूरोप रे. What is Renaissance? French Revolution Renaissance ପରେ ହେଲା Renaissance ର ଗୋଟେ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ଆମର French Revolution, Russian Revolution ଏଗୁଡା କଥା. ପୂର୍ବରୁ କଣ ବହୁତ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ ଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ର ଫାଦର ବୁଝିପାରୁଛ? yes, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ, ଜମି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା. What was the means of production? Agriculture, only agriculture. No industries were there, not transportation, communication, nothing was there. Okay, only agriculture was there. ତ ଚାଷ ଜମିଟା କାହା ହାତରେ ଥିଲା? ପପ୍ ମାନଙ୍କ ଫାଦର ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା. ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ କାହା ଭିତରେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ. ତୁ ଏତିକି ନେ, ଏତିକି ଚାଷ କଲୁ, ଏତିକି ଦବୁ, ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦବୁ, ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦବୁ. So they started exploiting the people like anything in the name of God. ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଜେନ୍ ଜାକ୍ ରୁସୋ, okay, ଜେନ୍ ଜାକ୍ ରୁସୋ କିଏ? The propounder of French Revolution. Okay, Aristotle, Plato ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଥିଲେ. ତ ସେମାନେ ୟା ବିରୋଧରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିଲେ. Okay, John Locke, John Stuart Mills, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲେ, ସେମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ, ଲୋକ ଆୱେୟାର ହେଲେ. ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, and they started revolting against the system. That is what Renaissance is. That is the phase of Renaissance. Renaissance is the moment. Renaissance is the period in the history. Okay, where people started to thinking scientifically. Okay. तो मु कोन कहउथि हां तो जो मानकर पोर सोशियो कल्चरल कंडीशंस अछि ताका पाके साइंटिफिक टेम्परामेंट नाही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नाही, लॉजिक नाही ताका पाके. बुझि परछ? किछि लॉजिक नाही. सपोज जेमति कि हमर जो अबे उत्तराखंड टनल लोक फसी गले, काहे कि फसिले? काहे ना पत्थरटा से को जगह रे गोटे वीक थिला, ड्यू टू वाइब्रेशन एंड ऑल दैट इज मैन मेड, इट्स अ नेचर नो. बुझि परछ ना? अरे तमे देखि गोटे पहाड़ रो खोडिबो, आउ सामने पर्टिकुलर प्रोसीजर भी फॉलो कर नथिले. एते बड़ टनल जोटा 1 किलोमीटर रो अधिक टनल जे तमे खड़ा जाउची, देन द गाइडलाइन सेज कि तमे गोटे सीक्रेट पैसेज रखिबो, किछि गोटे